ये छोटे थे ना, they were like 4 5, तो ये बाथरूम गया है and he would not even call the ayah to like help him. So he stayed in the bathroom for 1 hour. Send them to a school. Send them to play dates. I've heard so many good things about Gymboree. What advice would you give to ammis of like, teach them how to draw yourself. They don't need to see it on a screen to learn. And I think the big question mark is, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के वीलॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ स्पीच मैटर्स, जहाँ पर हम महक नसीम के साथ बात करेंगे। महक नसीम एक यूके क्वालिफाइड स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है। उन्होंने 4 इयर्स की डिग्री की है फ्रॉम द यूके और वो 2 सालों से स्पीच मैटर्स चला रही हैं, जहाँ पर 200 से ज़ायद बच्चों को उन्होंने 95 to 100% सक्सेस रेट के साथ हेल्प किया है। तो महक का सेंटर इस तरह के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। दोनों तरह से वो मुझे बता रही थी कि ऑटिस्टिक एंड ADHD बच्चों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। तो महक, जब हम स्पीच डिलेज की बात करते हैं तो आजकल लाइक ऐसे लगता है कि हर दूसरे घर में किसी बच्चे को स्पीच डिले है। ये क्यों हो रहा है? I think mainly the reason, अभी जो reason right now है ये बन रही है कि there's a lot of screen time. Obviously parents अपनी routine में busy होते हैं and there's not a lot of social activities in Lahore right now. Parents are busy in their own routine, उनकी अपनी routine होती है, तो I feel ज़्यादा वो time नहीं दे पाते बच्चे को, तो they replace it with screen. अब screen is good to an extent, but only after the age of 4. उससे पहले आप बच्चे को screen दे दोगे, it will affect their brain development. बट कुछ लोगों का लगता है कि स्क्रीन से बच्चे ने बहुत सीखा है। लाइक मुझे स्केरी अम्मी पे अक्सर माएँ कहती हैं कि हमारे बच्चे ने 3 साल की उम्र में पता नहीं कलर्स भी सीख लिया, एनिमल्स भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, वो भी सब कुछ फ्रॉम स्क्रीन। तो आपको लगता है कि स्क्रीन एक अच्छा एजुकेशनल टूल है? I think अच्छा educational tool it can be, but after the age of 4. ओके 4 साल के बाद आई फील उससे पहले आप ये चीज़ें खुद कर सकते हैं। आप ये चीज़ें पेपर आप बच्चों के सामने रखें, होल्ड देयर हैंड, मेक देम राइट, you can do all this yourself. बिल्कुल They don't need to learn through a screen. And I feel कि are they actually learning because they're just watching? Yes. एक होता है ना when you learn something, तो आपको समझ भी आती है। हमें खुद करना कुछ पड़ता है, फिर हम सीखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो स्क्रीन है क्या वो एक अच्छा एजुकेशनल टूल है? अच्छा एजुकेशनल टूल आई फील इट वुड बी आफ्टर 4 साल के बाद। उससे पहले आप बच्चों को चीज़ें दे रहे हैं, जैसे आप खुद चीज़ कर सकते हैं। यू कैन हेल्प देम राइट, यू कैन पेपर लें, पेन लें, होल्ड योर चाइल्ड्स हैंड, teach them how to draw yourself. They don't need to see it on a screen to learn. And I think the big question mark is, are they actually learning from a screen? Because जब हम कुछ सीखते हैं हमें खुद कुछ करना पड़ता है. We have to do it ourselves, and that's how we learn. We don't learn by watching. You have to physically do it yourself. So that would be my argument on that. Yeah. तो अभी आपको मतलब जब हम छोटे थे या जब आप भी छोटी थी, तब जो हमारा लाइफस्टाइल था क्या वो बचा है कि अब तब स्पीच डिलेज कम थे और अब ज़्यादा है? कि क्या आपको लगता है कि अब अवेयरनेस ज़्यादा है? मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि 20 साल पहले तो ऑटिज़म नहीं था और अब है। इज़ दैट ट्रू कि क्या तब भी ऑटिज़म था लेकिन उसकी अवेयरनेस नहीं थी? आई थिंक पहले स्पीच डिलेज, ऑटिज्म वगैरह इनकी अवेयरनेस नहीं थी, पर पहले आईपैड्स भी नहीं थे, पहले मोबाइल फोन्स भी नहीं थे। If you look at an iPhone, उसका स्क्रीन it's like this big. Yes. तो अब आप पुराने फोन नोकिया के आप इतने उसका काम सिर्फ फोन कॉल था। Yeah, exactly. तो पहले वो भी चीजें नहीं थी, पहले नेटफ्लिक्स भी नहीं था। And this is just a small example, Ayesha. I went to Paulo's yes. the other day, और वहाँ हर बच्चे के पास iPad. Really? Every child had but like an मुझे iPad. यही नहीं समझ आता कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को ले ही गए हैं रेस्टोरेंट
Yeah. right? तो फिर why give them an iPad? Like Paola's is an expensive restaurant, but expensive ना भी हो, आपने time भी निकाला, Yeah. आपने पैसा भी निकाला, Yeah. राइट आपने पेट्रोल भी लगाया, तो अगर Yeah. आप अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना, लाइक यू नो पीपल से कि पाकिस्तान में फैमिली वैल्यूज बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है कि दैट्स नॉट ट्रू, बाहर ज़्यादा है, बिकॉज बाहर मे बी बिकॉज उनके पास टाइम कम होता है, तो वो जब अपने बच्चों के साथ होते हैं या जब डिनर टेबल पे होते हैं, Yeah. उनके फोन्स ऑफ होते हैं, इनफैक्ट वो तो बड़ा माइंड करते हैं अगर डिनर टेबल पे किसी बंदे ने फ़ोन उठाया, लाइक मैं अमेरिका में जब मैंने अंडरग्रेड किया तो अगर मैं किसी फैमिली ने मुझे इनवाइट किया था फॉर डिनर एंड अगर मेरा फ़ोन बजे या सो दे वुड एक्चुअली माइंड इट, वहाँ जाके मैंने सीखा कि आपको डाइनिंग टेबल पे फ़ोन साइलेंट रखना है. इट्स टॉकिंग टाइम एंड वो पेरेंट्स हमारे बिठाते थे और अब कहते थे बताओ आज पूरा दिन क्या किया है, एंड देन वी वर ऑल गो बाय वन कि हमने आज पूरा दिन क्या किया है. और वी ऑल्सो हैड माई मॉम लव्ड लाइक वो कलरिंग बुक्स, हाँ, तो आप हाँ. वो ले जाओ रेस्टोरेंट में. आई नो आई थिंक पेरेंट्स ऑल्सो वांट अ ब्रेक, दे जस्ट वांट टू ईट Yes. विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो आप कैरी कलरिंग बुक्स एंड कलर्स एंड उनको एक रूटीन में ये उनको Yeah. उनको ये ऑप्शन दे ही ना कि अच्छा, iPad भी है, बिल्कुल, या आपका फोन भी है. Yeah. मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान में ना मेड कल्चर ने बहुत खराबी पैदा की That's है, true. बिकॉज इन द यूके या इन द यूएस एक तो नैनीज बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो आप उन्हें लिमिटेड आवर्स के लिए ही बुलाते हो, और दूसरा वो ट्रेंड होती है ना. तो हमारे यहाँ लाइक यू नो अक्सर लाइक लोग सोशल मीडिया पे मीम्स बनाते हैं कि हम मेड के पास अपना पर्स नहीं छोड़ेंगे बिकॉज यू नो वी बिलीव कि दे माइट स्टील, लेकिन हम बच्चे छोड़ देते हैं, राइट. बट यू नो इट्स सैड, बट इट्स ऑल्सो द फैक्ट कि पाकिस्तान में you know maids are uneducated and they are unaware, and every maid, every khoke wala now has a phone. So when you leave the child alone with the maid, obviously he's going to. But I also, Aisha, there was a case here, and the जो maid है वो थोड़ी सी she was lazy. She didn't want to run after the child या उनके साथ कुछ खेलना वगैरह. तो वो क्या करते थे, maids would give their phones to the baby. Yes, to the ये children, बहुत कॉमन कि है वो थोड़ी देर चुप कर जाए क्योंकि मेहनत उन्होंने खुद नहीं करनी. तो आई फील जो आप एज अ मम यू कैन डू the minute that you do, a maid cannot. But I do understand we all need maids, especially in this country. It's just a lot of help. It's a blessing. But I feel keep a balance. Yes. Or keep an eye on the maid. Be alert. Yes. Yeah, and have that awareness. बिल्कुल, बिल्कुल. अच्छा महक, मुझे बताओ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था मेरे बेटे के स्कूल में. ही वाज एट किड्स कैंपस, सो उसका एक फ्रेंड था जो यूके से आया था, एंड ही वुड टॉक वेल इन द यूके, मतलब यूके में उसको कोई इश्यूज नहीं थे, वो घर पे भी सही बात करता था, बट इन द स्कूल ही वाज म्यूट टू एन एक्सटेंट के मतलब यू नो ये छोटे थे ना, दे वर लाइक 4-5, तो ये बाथरूम गया है and he would not even call the ayah to like help him. So he stayed in the bathroom for 1 hour. Oh no. Like he was that मतलब oh my God. that mute कि मतलब होता है ना कि चलो आप by your own choice ना बोलो, लेकिन बाथरूम में वो घंटा डेढ़ बैठा रहा. Oh God. So this really and then I know. So the teacher told me कि this is selective mutism. ये क्या होता है? ये कब होता है? So ये I feel it can happen because of a lot of reasons. एक तो बच्चा, he's probably really shy. He's been traumatized about anything. He's seen something on screen. It scared him. There's just many reasons, but these are like the basic reasons you can say. And what happens is वो अपने family member के साथ comfortable है. Maids होगी घर में, cook हो गया, father, mother, extended family, taya, chacha, whatever. So they are very comfortable with them because they see them every day. What advice would you give to ammis of like 1 to 4-year-olds in Pakistan कि वो क्या करें to make sure कि उनके बच्चे में speech delay के chances कम हो? Like क्या 3 tips आप दोगी? 3 tips मैं ये दूंगी कि early intervention. So there's a lot of things under that umbrella. So things like play, learning through play, just simple things like blocks
बच्चों के बिल्कुल, सामने लेगो, रख दो। puzzles, I love Exactly, puzzles. puzzles. अच्छा, मुझे सेंसरी प्ले भी बहुत पसंद है। Yeah, एंड यू नो मैंने बच्चे जो उस चीज सेंसरी से प्ले सीखते बनाया हुआ है हैं। उसमें लाइक दालें, चावल, Yeah. चनास। Yeah, so very Pakistani Yes. type, desi type. Yeah. But yeah, these things, send them to a school. Send them to Play I've dates. heard, yeah, I've heard so many good things about Gymboree. Yes. They're really good with all this pre-play thing. बिल्कुल। So I've not या घर personally. पे कर लो, बिकॉज घर पता पे है आप अब कर लो। अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ा इशू है ना, बिकॉज विद द इन्फ्लेशन एंड I रिसेशन। think the good thing about यहाँ extended families stay बिल्कुल। together, I think that's a very good thing, क्योंकि फिर बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, because then there's other kids in the house. या So it's neighborhood nice, में। yeah. But I think if you're living on your own, you're a parent and you've got 2 kids, try and take time out, try and play with them, get them maid. You have to force the maid to play with them. I think that really helps. Yeah. Kids learn through play. Yeah. So I would say these few tips I would Great. give. Yeah. Thank you, Mehak. No worries. I would love to know your thoughts.